Good afternoon. I welcome all the deans, directors, principals, faculty members, and my dear students. I welcome you all to this very special broadcast on the United Nations Sustainable Development Goals. This broadcast is very significant as this is for us and our future generations. It is about saving Earth. It is also about saving this beautiful planet from extinction. In order to save this Earth, United Nations has decided upon certain goals, 17 goals, which will make this Earth sustainable and livable for all of us. The Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, including those related to poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace, and justice. The 17 goals are all interconnected, and in order to leave no one behind, they help us in making this place a better place to live on. NIMS University has adopted 10 goals, and we will be the pioneers in addressing this issue in the whole of our higher education ecosystem in the India. Now, I would like to invite our Honorable Chairman and Chancellor, Sir, Professor Dr. Balveer S. Tomar, Sir, to share his vision regarding the Sustainable Development Goals and how NIMS University has taken the initiative to pioneer this cause and make the planet a better place. Sir, I welcome you to this special broadcast. Hello. All my dear students, faculty members, and staff members, good afternoon. Today, we are assembled here online to talk the sustainability. You must know what is the meaning of word sustainability and what is the meaning of word sustainable world. And when I say world, I think it is old world. We should say sustainable planet. My friends, you know, the sustainable world I will better utilize, and since now onwards, every students and faculty will use the planet words. Sustainable planet. Why planet? My friends and my small dear friends, we all know that there are many planets in this solar mandal, and Earth is one of them. So we all are living on Earth. When we say world, normally designates that human being. We say world, country, that means human being. When I say planet, that everything on the planet comes under one heading. So we should start using planet. Our Earth is one planet, and we are living on this planet. Now, we have to make this planet sustainable planet. So what is the meaning of sustainability, a sustainable world, or sustainable planet? Sustainable planet and sustainable world means we should living this era, and we should in this era with living, we must have very modern life, very technical life, very advanced life, and very good social life. That's called sustainable world. But this is for this generation in which we all are living. But main underline behind this is that making this today a sustainable planet, sustainable world, also means that we should do all innovation
lot of industry, lot of manufacturing, but at the same time, here lies in between line that while doing all this new technology, new growth, new development, we should keep in mind that after 20 years or after your generation, which is coming up, when they will be in the middle age, they must not suffer the unsustainability. That means we should grow today with making the world sustainable, because if we will not make this attention clear, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, because of more innovation, more technology, there is more carbon emission. When there is more carbon emission, then this will slowly and slowly leave a lot of pollutions. Not only the carbon emissions, there are many other ways in which higher technology produces the carbon, in which way we live, we produce the pollution. And so, today's meeting idea is that my small generation, my small dear friends, my small dear people, my small dear students, you must understand, because this talk is for us also, and more valuable for you also, and more valuable for you in particular, because we want to make a planet that remains sustainable when you reach in 30s, and then next generation of yours come, still then the planet should remain sustainable. So this is called sustainable world. Now, making the sustainable world, we have to think very seriously. Why? I will give just a simple example that not in the world, but I'll say planet, means whole of the planet temperature, whole of the earth, not world, whole of the earth planet temperature has risen since last 50 years to only 1 degree centigrade. Remember, what I am telling to you. Since what modern life we are living, what technical life we are living, while high technology we are using, lot of carbon emissions are there, a lot of other fuels are there, which are affecting the greenhouse gas emissions. Because of this, in the last 50 years, the emission, pollution, and all these things has made our planet temperature 1 degree centigrade. Only 1 degree centigrade. You will say, my dear friends, small friends, then what is 1 degree centigrade? Nothing. We can survive. No. When the planet as whole temperature has risen from 1 degree centigrade, today we are having devastating changes. आपने देखा होगा, आज आप नवंबर में रह रहे हैं. जब आप थोड़े छोटे बच्चे थे और छोटे थे, या हमारे टीचर्स यंगस्टर थे, नवंबर में विंटर, अच्छी खासी विंटर पड़ती थी. अब आप देख रहे हैं कि अभी विंटर नहीं है, तो यू आर फीलिंग मोर हॉट. सिमिलरली, जो कंट्रीज बहुत हॉट कंट्रीज थे, उन कंट्रीज में दे हैव बिकम मोर वार्म, वार्म एंड वार्मर. उनमें उनके जंगलों में आग लग रही है. सो one simple 1 degree rise of 1 degree centigrade temperature of the planet is producing devastating changes. और आप देख रहे हैं, बहुत से छोटे छोटे द्वीप समुद्र के पानी में डूब गए हैं. आप अखबारों में पढ़ते होंगे, गूगल में सर्च करते होंगे, बहुत से कंट्रीज की राजधानियां जो कि सी में टापू हैं, वो उनको बस
बसाया जा रहा है दूर कहीं कि डूबती जा रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इंडोनेशिया कंट्री है जो बहुत ही 2000 से ज्यादा और से भी ज्यादा 17,000 छोटे छोटे टापूज हैं उनका बना हुआ एक देश है। 2000 काफी बड़े टापू हैं उसके अंदर। एक टापू जिसपे उसकी राजधानी है सुमात्रा जावा, इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता। वो जकार्ता धीरे धीरे जकार्ता शहर धीरे धीरे पानी में डूबता जा रहा है। क्यों? ऐसे बहुत से टापू दुनिया में डूब रहे हैं और बहुत से डूब गए। बहुत से कंट्रीज में समुद्र अंदर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आप जानते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हमारे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे बहुत बर्फ जमा है। अंटार्कटिका कहते हैं, वहां बहुत बर्फ जमा है। सिंगल 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्लेनेट का बढ़ने से वो सारी बर्फ पिघल रही है और उसको पिघलने से हमारा सी लेवल बढ़ रहा है। तो इसीलिए जब सी लेवल बढ़ रहा है तो सी लेवल अर्थ को ढकता जा रहा है और छोटे छोटे टापू डूब रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ द हीट। सो हमें क्या करना है? हमें इस वर्ल्ड में पैदा होने वाली हीट को बचाना है, लेकिन साथ में हमें इनोवेशन भी करना है, टेक्नोलॉजी भी करनी है, अच्छी लाइफ भी जीनी है, नई टेक्नोलॉजी भी लानी है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि सस्टेनेबल तरीके से रहते हुए, ग्रोथ करते हुए, टेक्नोलॉजी लाते हुए ऐसा करना है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आने वाले समय में हम आपके लिए और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी इस वर्ल्ड को ऐसा बनाएं कि वर्ल्ड सस्टेनेबल रहे। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अभी आपसे मैंने कहा कि लास्ट 50 साल के अंदर सिंपल 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लेनेट का बढ़ा है, पर आप देख रहे हैं कि लास्ट 20-30 इयर्स में, लास्ट 10 इयर्स के अंदर बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ी है। आज आप देखते हैं कितने हवाई जहाज उड़ रहे हैं, कितनी चीजें उड़ रही हैं, सबसे कार्बन इमिशन हो रहा है। उसका एक एग्जांपल आपने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों। आपने देखा होगा जब अनफॉर्चुनेटली कोरोना आया था और कोरोना के समय में लॉकडाउन कर दिया गया था, उसमें प्लेन्स नहीं उड़ते थे, जर्नी नहीं उड़ रही थी, ट्रैफिक नहीं चल रहा था। तो मैं समझता हूं उन दिनों को, बुरे दिनों को याद करो, लेकिन उसमें एक अच्छाई क्या थी आपने देखा होगा। उसमें आपको आपका नीला आसमान दिखता था, आपको दूर दूर के पहाड़ दिखा करते थे। बहुत दिन नहीं गुजरे हैं, 1 साल 1.5 साल गुजरा है और आपको आज नीला आसमान नहीं दिखता, आपको आपके पेड़ नहीं दिखते हैं, आपको पहले आपके पौधे, प्लांट्स काफी ग्रीन दिखा करते थे, आज आपको फिर डर्टी दिख रहे हैं। आपने देखा क्योंकि हमने क्या किया? हमने सिंपली सारी इंडस्ट्री बंद कर दी, हमने सारा एरोप्लेन बंद कर दिए, सब लोग घर के अंदर घुस गए। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो हम जी नहीं सकते और वर्ल्ड कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, देश कभी इनोवेट नहीं हो सकता, आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते हैं, उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। हम एक छोटी सी झोपड़ी में बंद होकर रह जाएंगे, हम वो भी नहीं चाहते। लेकिन मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपने एक छोटा झटका देखा, आप सब लोग सब कुछ चीजें बंद कर दी गई, तो आप देखते हैं वायुमंडल कितना स्वच्छ हो गया, राइट? तो इसी को मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। लेकिन सबसे वार्निंग ये दी जा रही है अब कि आने वाले 2040 में ये टेम्परेचर जो कि सिर्फ 1 डिग्री बढ़ा है, वो बढ़ के अब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। सोचो मेरे बच्चों, आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, क्या बढ़ रहा है? सिर्फ 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर कुल
1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा पूरे प्लेनेट का, और उस समय ये आपका प्लेनेट डिवास्टिंग हो जाएगा। और अगर उसमें हमने नहीं रोका तो उसके 10 साल के अंदर अंदर ये प्लेनेट नष्ट हो जाएगा। इसलिए पहले 50 साल में 1 डिग्री बढ़ा, अब आने वाले 20 साल के अंदर क्या हो रहा है कि आपको 0.5 बढ़ेगा। फास्ट बढ़ रहा है, बिकॉज फास्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा एमिट हो रही हैं, और वो लगातार मल्टीप्लाई करती जाएंगी। तो जो चीज 50 साल में हुई अब वो 20 साल में हो जाएगी, और जो 20 साल में हुई अगले 10 साल 5 साल में हो जाएगी उसके बाद। तो और 2 डिग्री सेंटीग्रेड जब पहुंच जाएगा, प्लेनेट का बढ़ जाएगा, ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जस्ट टू मेक द वर्ल्ड, आपकी आने वाली जनरेशन, हमारी जनरेशन, हमारे बाद की जनरेशन आप हैं, आपकी जनरेशन या आपके एडल्टहुड की जनरेशन, आपके ओल्ड एज की जनरेशन, उस पीरियड को बचाने के लिए हमको एक बहुत मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ टेक्निकल आने की वजह से ये ब्रॉडकास्ट रुक गया। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमने ये कहा आने वाले 2040 तक हमें 0.5 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ने से रोकना है, ये हमारा एम है। और फिर हमको 1 डिग्री टेम्परेचर जो बढ़ चुका है उसको नीचे करना है, पहले रोकना है कि हम 0.5 डिग्री टेम्परेचर अपने प्लेनेट का नहीं बढ़ाएं, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली नहीं बढ़ाएं। इसके लिए विश्व के सारे देश ने मिल करके, जिसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, गोल बनाए हैं। ऐसे गोल बनाए हैं कि जो 3 भागों पर डिपेंड करते हैं, सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल। यानी हम सस्टेनेबल वर्ल्ड का बनाते हैं जब सब लोग सोशली खुशी रहें, एंड सोशली खुशी रहने के लिए बहुत सी बातें होती हैं। हमें इकोनॉमिकली ग्रोथ करना है, हम नहीं करेंगे तो हम दुनिया में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। हर कंट्री को ग्रोथ करना है, हर मनुष्य को ग्रोथ करना है, लेकिन साथ में सबसे मेन बात है कि हमको अपने एनवायरमेंट पे ध्यान देना है। यानी सस्टेनेबल वर्ल्ड के 3 पिलर्स हैं। नंबर 1 सोशल इंप्रूवमेंट्स, इकोनॉमिकल इंप्रूवमेंट्स एंड environmental sustainability. This is the main point, main 3 pillars of the sustainable world. इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल बनाए हैं। आज हमारे बहुत से प्यारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को, हमारे फ्रेंड्स को
इन गोल्स के बारे में पता होगा। जिनको नहीं पता है, मैं अपने प्यारे छोटे छोटे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, ये 17 सस्टेनेबल वर्ड्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं। इसलिए बनाए हैं, इन पे हम पालन करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 2040 तक हम विश्व में प्लेनेट के 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो बढ़ने वाला है उसको रोक देंगे तो आने वाला समय हमारे लिए तो होगा ही, आपके लिए मेरे बच्चों और आपकी जनरेशन के लिए या आपके ओल्ड एज के लिए भी आपको सस्टेनेबल वर्ल्ड में रहने के लिए एक खुशी पैदा करेगा। ये गोल क्या है? गोल नंबर 1 जो है सस्टेनेबल गोल का है नो पॉवर्टी। गोल नंबर 2 है जीरो हंगर। गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। गोल नंबर 4 is for you, everybody, quality education. Goal number 5, gender equality. Goal number 6, clean water and sanitation. Goal number 7, we have to see clean and affordable energy. Goal number 8, decent work and economic growth. Goal number 9, industry, innovation and infrastructure. Goal number 10, reduced inequalities. Goal number 11, sustainable cities and sustainable country. Goal number 12, responsible consumption and production. Goal number 13, climate action. Goal number 14, life below water. Goal number 15, life on the land. Goal number 16, peace, justice and strong institutions. And goal number 7 is partnership and making these sustainable goals successful. These are 17 goals of United Nations. हमें इन 17 गोल्स पे काम करना है। आपको मेरे प्यारे बच्चों पता होगा कि निम्स पहला इंस्टीट्यूट है जिसने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक नई स्थापना की है आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में, निम्स यूनिवर्सिटी में। एंड इन सारे गोल्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने ऐसा चुना है कि हम हर महीने एक गोल लेंगे और उस गोल पे सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स, सारे हमारे टीचर्स, सारा फैकल्टी, स्टाफ मेंबर्स, निम्स फैमिली काम करेगी और उस गोल को पाने में हम सक्सेस होंगे। तो हर महीना एक गोल के लिए होगा, यानी 17 महीने तक हम 17 गोल को मनाएंगे और हम देखेंगे कि इन 17 गोल को सेलिब्रेट करते हुए हमने अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के गांवों को, अपने आसपास के कस्बों को कितना सस्टेनेबल बनाया। अगर हर आदमी, हर इंस्टीट्यूशन, हर संस्था इस तरह से आगे बढ़ेगी तो आई एम वेरी श्योर कि यूनाइटेड नेशन द्वारा बनाए हुए 17 सस्टेनेबल गोल को हम पालेंगे और 2040 में जो कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने वाला है प्लेनेट का, सर्टेनली उसको हम रोक देंगे। तो मेरे बच्चों, आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपके लिए योगदान है। आज जो लोग 50, 60, 70 साल के हो गए हैं वो तब तक खुद ही मर जाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो आप 16, 17 साल के हो, अपना जीवन गुजारना है पूरा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो हम सब मिल करके, नॉट ओनली यू, हम सब मिल करके ऐसा गोल करें, इन सारे गोलों को अचीव करें कि आप जब 2040 में जाएं तो ये महसूस करें कि यस, हम सब ने मिलके अपने प्लेनेट के
टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होने दिया, वी आर सस्टेनेबल। देन उस समय आप सब मिलकर के इसको बैक करेंगे कि हम 1.5 से फिर 1 पे लाते हैं, फिर इसको और खत्म करते हैं। दिस विल कंटिन्यू, इट्स एंडलेस प्रोसेस। सो हमें अब बहुत फास्ट तरीके से काम करना है। तो मैं अपने पुरानी बात पर आता हूं कि हमने 17 सस्टेनेबल गोल को अपनाने के लिए जो हमारा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है निम्स का, उसमें नवंबर महीने को हम लोग नो पॉवर्टी, जो गोल नंबर 1 है यूएन का, एसडीजी का, उसको मना रहे हैं। आपने जगह जगह बोर्ड भी देखे होंगे कि निम्स सेलिब्रेटिंग अंडर द एजीज ऑफ ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी। आप कहेंगे नो पॉवर्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। पहली बात, नो पॉवर्टी, पॉवर्टी कैसे आती है? पॉवर्टी इसलिए आती है, पॉवर्टी क्या होती है? गरीबी। गरीबी क्या होती है? गरीबी में आदमी को खाने को नहीं मिलता, रहने को नहीं मिलता, गरीबी में कपड़ा पहनने को नहीं मिलता, गरीबी में सुविधाएं नहीं मिलती, गरीबी में उसको मॉडर्न सुविधाएं नहीं मिलती उसको। इसमें देश तो कर ही रहा है, दुनिया तो कर ही रही है, लेकिन आपका जो रोल है, जो आप कर सकते हो, ये कर सकते हो नो पॉवर्टी के लिए कि आप गरीबी को दूर करना है। आप गरीब नहीं हैं, या जो आपके साथ के स्टूडेंट गरीब हैं, उनको आप ध्यान दें और उनको हेल्प करें। उनको हेल्प करेंगे तो आपने एक समुद्र में एक बूंद का काम किया कि आपने नो पॉवर्टी में आपने एक कदम को आगे बढ़ाया। दूसरा सबसे बड़ा काम होता है नो पॉवर्टी का, या पॉवर्टी लाने का काम होता है कि लोगों को जॉब नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक बोलेंगे वी आर नॉट इंडस्ट्री, हम लोग जॉब कैसे दें? तो आप क्या करें? उसके लिए मेरे स्टूडेंट्स गांव में जाएंगे, उनका बैच बनाया जाएगा, गांव में जाएं और गांव में जा कर के उनको स्किल सिखाएं। कुछ स्किल सिखा दें, सिलाई सिखा दें जो सिखा सकते होंगे, आप छोटी छोटी बातें करना सिखा दें कि भाई कैसे आप चरखा चलाइए, या कैसे आप छोटी सी बिजली में जोड़ करके इस तरह की चीज़ें बनाइए जिसको आप खिलौने बनाइए, डिफरेंट कौशल बनाइए, स्किल डेवलपमेंट करिए। स्किल से क्या होगा? उनको चीज़ें बाजार में बिकेंगी तो उनको खाने पीने का पैसा मिलेगा। और साथ में उनके बच्चों को शिक्षा दीजिए कि भाई तुमको पढ़ना है, जब तुम पढ़ोगे तब तुम आगे बड़े इंसान बनोगे, कमाओगे, खाओगे, परिवार को पालोगे। तो नो पॉवर्टी आप इस तरीके से दूर कर सकते हैं। एक और तरीका है नो पॉवर्टी का, आप मेस में खाना खाते हैं, आप कहीं भी खाना खाते हैं, बाजार में खाना खा रहे हैं, आप ज़्यादा खाना डाल देते हैं थाली के अंदर। जब ज़्यादा खाना थाली में डालते हैं उसमें तो आप सोचते हैं हम खा जाएंगे, लेकिन आपकी भूख खत्म हो जाती है। तो खाना क्या होता है? वो खाना वेस्ट होकर फेंक दिया जाता है। आज अगर आप लिमिटेड वही खाना खाएं, चाहे आप निम्स में खा रहे हों, चाहे बाहर खा रहे हों, तो खाना खराब नहीं होगा। हो सकता है वो खाना किसी गरीब के काम आ जाए और उसका पेट भर जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, जो सीनियर बच्चे हैं जो पढ़ के बाहर जा रहे हैं, या उनका प्रमोशन हो गया, उनकी अपनी किताबें हैं, उनके अपने नोट्स हैं, उनकी चीज़ें हैं, वो अपने जूनियर्स को दे दें जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। उससे उसकी आप पॉवर्टी दूर कर सकते हैं। इसके अलावा बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगता है, हमारे अच्छे अच्छे प्यारे बच्चे स्मार्ट कपड़े पहन के घूमते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है अच्छे जूते पहन के घूमते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है 1-2 महीने पहनने के बाद आपको लगता है फैशन चली गई, या आपको लगता है कपड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बार बार पहन चुका, तो उसको आप फेंक देते हो, या आपके कमरे में पड़ा हुआ है, आप उसको फिर महीनों नहीं पहनते हो, साल नहीं पहनते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, टीचर्स, मेरी फैकल्टी निम्स यूनिवर्सिटी, उसको एक जगह बनाई जा रही है, ऐसे बॉक्स बनाए जा रहे हैं जिसमें आप डाल दें। आपके उपयोग की जो चीज़ नहीं है उसको उसमें डालें, और वो चीज़ निम्स
आपके बिहाफ पे उन आसपास के गांवों को, आसपास के कस्बों में, आसपास के रहने वालों को, या जो वर्क फोर्स गरीब है हमारे अंदर काम कर रही है, लेबर्स हैं, उनको बांट दिए जाएंगे। तो आप इस तरीके से उनकी पॉवर्टी का एक पॉइंट दूर कर रहे हैं। तो नो पॉवर्टी को आप इस तरीके से हम लोग दूर करेंगे। और आपको लग रहा है कोई भिखारी पड़ा हुआ है जो वास्तव में समर्थ है, अगर वो बहुत से भिखारी ऐसे होते हैं कि वो समर्थ हैं लेकिन भीख मांग रहे हैं, तो अपनी कार से उतर के, गाड़ी से उतर के उनको समझाएं कि भाई नहीं, भीख नहीं मांगना है अपने को, और उनको गाइड करें कि भाई आप ये काम कर सकते हैं, किसी दुकान पर काम कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, उनको शिक्षा दें। तो शिक्षा दे करके भी वो अपनी पॉवर्टी को आप शिक्षा देंगे, उनकी पॉवर्टी दूर होगी। तो आप सोचिए, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। यू आर ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, यू कैन थिंक ऑफ दैट। ऐसे करके आपके अंदर अभी आप आइडियोथ्यान बना रहे हैं, नए नए आइडियाज ला रहे हैं, तो अब इसमें एक नया आइडिया लाइए कि मैं निम्स यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नो पॉवर्टी पर डिफरेंट एंगल्स में निम्स के लिए, निम्स के गरीब स्टूडेंट्स के लिए, गरीब स्टूडेंट साथियों के लिए, निम्स में काम करने वाली लेबर के लिए, और आसपास के विलेजों में, कस्बों में, या जो आपको दिख रहा है आदमी, उसके लिए हम कैसे उसको पढ़ा के, समझा के, स्किल डेवलपमेंट करा के, कौशल सिखा के, उसको उत्साहित करके कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो आज ये महीना हम पूरा नवंबर नो पॉवर्टी बना रहे हैं, और आप आइडियाथॉन में कुछ इसकी बातें भी दिखा देंगे कि भाई नो पॉवर्टी में हम और क्या कर सकते हैं। यू आर द मोर सक्सेसफुल पीपल माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर द मोस्ट ब्रिलियंट पीपल, यू हैव लॉट ऑफ आइडियाज। और आपको जान के खुशी होगी कि निम्स का जो इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट है, SDG, वो यूएन ने उसको मान्यता दी हुई है। और जब आपके 17 गोल 17 महीने में पूरे होंगे, तो आपके साथ यहाँ पे आप सबके बीच में यूनाइटेड नेशंस के लोग आएंगे और आप सबकी पीठ थपथपाएंगे। तब तक 17 महीने में आपने सस्टेनेबल गोल में बहुत कुछ कर दिया होगा, और इस प्लेनेट के टेम्परेचर को रोकने में काफी कुछ कमी कर दी होगी, और यूएन के 17 सस्टेनेबल गोलों को पा लिया होगा। पा लिया होगा मतलब आसपास के एरिया में पा लिया होगा। हम पूरे वर्ल्ड में नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें समुद्र में एक एक बूंद डालनी है। आप एक बूंद हैं, एक बूंद काम करेगी तो धीरे धीरे घड़ा बढ़ता है। ऐसे ही आप, हम सब लोग मिलके एक एक गोल पर काम करेंगे। तो सस्टेनेबल गोल 17 होते हैं, उनको आप पढ़िए, और निम्स यूनिवर्सिटी हर महीने एक गोल बनाएगी और सारी निम्स यूनिवर्सिटी उस पर काम करेगी, और हमारे बच्चे नए नए आइडियाज लाएंगे और कार्यान्वित भी करेंगे कि उस सस्टेनेबल गोल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अभी आप लोग इस महीने सारे लोग काम करेंगे नो पॉवर्टी के ऊपर, और अभी जो आइडियाथॉन चल रहा है उसमें कुछ आइडियाज दीजिए कि नो पॉवर्टी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, और साथ में उसको कार्यान्वित करिए, एक्शन में लाइए उसके अंदर। आने वाला महीना, दिसंबर का महीना आएगा, उसको हम लोग जीरो हंगर के रूप में मनाएंगे। फिर मैं आपको फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मिलूंगा, तब तक आप जीरो हंगर के बारे में पढ़ लीजिएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सब पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट दिसंबर के महीने में हम लोग जीरो हंगर पे मनाएंगे, और जीरो हंगर से हम ये कहेंगे कोई भूखा नहीं रहे। उसके लिए डिफरेंट मीन्स हम लोग बनाएंगे। तो आज की बात क्या हुई कि हम लोग इस प्लेनेट को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? मैंने बताया कि टेम्परेचर को जो 1 डिग्री बढ़ चुका है उसको 0.5 और डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ने से तुरंत रोकना है, अदरवाइज डिवास्टिंग हो जाएगा। 2040 डिवास्टिंग हो जाएगा, और कहीं 2 डिग्री हो गया तो धरती खत्म हो जाएगी, प्लेनेट खत्म है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ राइज ऑफ प्लेनेट टेम्परेचर विल हैव डिवास्टिंग ऑफ द प्लेनेट। हम सब कोई नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग इसको हर महीने एक गोल मनाएंगे। पर ऐसा नहीं है एक गोल मना गए दूसरा भूल गए। हम लोग नेक्स्ट मंथ
जीरो हंगर मनाते रहेंगे, लेकिन नो पॉवर्टी पे काम करते रहेंगे, तो 17 गोल चलते रहेंगे, एक के बाद एक जुड़ता रहेगा और हमारे पीछे वाले आगे एक इंजन चलता रहेगा और पीछे के डब्बे उसमें खिंचते रहेंगे और काम करते रहेंगे। ये आपको मैंने बताना था। फिर आपको दिसंबर के हम फर्स्ट वीक में आप लोग मिलेंगे हम आपसे और जीरो हंगर के बारे में बात करेंगे। इसलिए आई मस्ट congratulate you, I must appreciate you, I must want that it's my request, it's my appreciation, it's my order also to you that we have to complete these 17 months on the UN sustainable goal of different sustainable goals and हम तन मन धन से इसको करें। और आई एम वेरी श्योर कि जब हमारा नवंबर का महीना पूरा हो रहा होगा और आप अपनी बातों को सुनेंगे, दिसंबर के महीने में जब फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हम नो हंगर मनाएंगे तो हम बताएंगे कि हमारे प्यारे बच्चों ने, हमारे प्यारे टीचर्स ने, निम्स फैमिली ने नो पॉवर्टी के लिए कितना बड़ा काम किया। इसको कहते हुए मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहूंगा, 1.5 डिग्री ओनली डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ना है प्लेनेट का और ये प्लेनेट नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। और 2 डिग्री में तो प्लेनेट खत्म हो जाएगा। उसका उदाहरण एक और मिलेगा। आपको जाते जाते कहना चाहता हूं, जब मैं छोटा था और उसके बाद बड़ा हुआ तो हमें कभी 10 साल में सुनने को मिलता था, 15 साल में सुनने को मिलता था कि कहीं अर्थक्वेक आ गया। आज आप देखते हैं आपके जयपुर में भी हर 2-3 महीने में भूकंप आ जाता है और हर वर्ल्ड के हर पार्ट में आप सुनिए कहीं न कहीं रोज भूकंप आ रहा है। क्यों भूकंप आ रहा है? कि आपका प्लेनेट अनसस्टेबल हो रहा है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये सब चीजें हमको करनी है, राइट? विद दिस आई वांट टू गेट एश्योरेंस फ्रॉम यू and you will work on sustainable goals, these 17 sustainable goals, and this November month whole we'll work together for making no poverty। हम खुद निम्स के अंदर और निम्स के आसपास नो पॉवर्टी का बनाएंगे, आसपास के लोगों को नो पॉवर्टी में जीने का मौका देंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thanks a lot. Our Honorable Chairman and Chancellor, Professor Dr. Balveer S. Tomar sir का बहुत बहुत धन्यवाद for enlightening us about the sustainability risk which the earth has। और हम सबको मिलके जो सस्टेनेबल गोल्स हैं उनको अचीव करना है ताकि हम हमारी आने वाली जनरेशन्स हमें धन्यवाद दे सके कि एक बहुत खूबसूरत पृथ्वी जो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है और सबसे बेहतरीन प्लैनेट है, उसको हमने अपने रहते हुए अपने आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए सुरक्षित रखा। और जो रिस्क हमको दिखे ड्यू टू डेवलपमेंट या किसी भी कारण से, उनको हमने मिटिगेट किया और टाइमली एक्शन लेके एक बार फिर से अर्थ को हरा भरा और रहने लायक बना दिया। सर ने काफ़ी सारी हमें बातें बताई, जैसे फूड वेस्टेज हमें रोकना, एक छोटा सा सर ने एग्जांपल दिया कैसे हम डोनेट कर सकते हैं अपनी बुक्स या अपने क्लोथ्स, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं पॉवर्टी एलिवेशन के लिए वो काम आ सके। एक दो चीज़ें बच्चे जो हम आप और हम लोग कर सकते हैं कि अपने कमरे से जब निकलें तो उससे पहले लाइट्स बंद कर दें, वो भी सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक हो सके हमने एक साइकिल का मुहिम चला रखी है, आप साइकिल्स यूज़ करें और कोई व्हीकल यहाँ पे यूज़ ना करें कैंपस में भी, और धीरे धीरे उसी से ट्रैवल करने की आदत डालें। जॉइंट पूल ड्राइव करें, एक साथ अलग अलग गाड़ियाँ ना ले जाएं, साथ में करें। और ये सब मिलके छोटी छोटी बातों को मिलके ही हम इस तरह से अपना योगदान दे सकेंगे कि निम्स यूनिवर्सिटी इस मुहिम को जो शुरू कर रही है, और वो कहते हैं कि अकेला ही चला था मैं, और लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो मुझे लगता है भारतवर्ष में निम्स यूनिवर्सिटी का ये पहला इनिशिएटिव है
जिसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे और हमारी जो पहल है वो यूनाइटेड नेशंस तक और पूरे विश्व तक ज़रूर पहुंचेगी। आपका फिर से धन्यवाद चेयरमैन चांसलर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे वाइस चांसलर, ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा सर को। वो हमें ये बताएंगे कि SDGs खासकर निम्स में हम लोग क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं नो पॉवर्टी मंथ को लेके। तो वाइस चांसलर सर, यू आर इनवाइटेड फॉर योर एड्रेस। Afternoon, respected our beloved chairman sir and other faculty, deans, principals and my dear students. So, we have been hearing this word sustainable development goal or SDG. So, let us dissect it to understand what it means. So, I will come to the second word, which is development, which means developing something, or basically it means growth. Now, we know that when growth happens, when something grows, the laws of management will tell you that it is a zero sum game. When something increases, then something comes down. But that is exactly which is non-sustainable, because if you allow any growth to happen without control, then it becomes cancer and then it destroys everything. And therefore, it is a non-sustainable growth. What we want is sustainable, which means which happens without any external support. So, sustainable means sustaining or allowing it to continue without any external help. Now, obviously, since we are talking of the planet Earth, so we cannot take help of outside planets for betterment of Earth as of now. So, therefore, we have to focus on sustainable development, otherwise Earth will get destroyed. So, this is the meaning of the word sustainable development goal. Now, the second thing that we now have to think is why we have to do it, which I discussed little bit and which our beloved chancellor also discussed. Now, second is when to go for it and then how to do it. So, these are I think questions that are normally asked: why, when and how. So, now we know that because many of us are doctors, and if you look at the earth, the patient earth is sick. This is a statement made by a very famous Norwegian physician way back in 1993, Per Fugeli, and he said that global environment disruptions can have serious consequences for not only the planet but human health. So, it is time for global doctors to give world a diagnosis and advice on treatment. So, which at the 1993, which you can imagine is now 30 years back, it was already realized that earth had gone sick and it required a diagnosis of what is happening and how to treat it. So, why do we say that earth is in danger? And our chancellor sir already told us that the world temperature has risen by 1 degree centigrade in past few years and so all of us witnessed this unprecedented heat wave, very hot summers and rise in temperature every year by year. Now, what happens with this rise in temperature? So, what happens is that there are profound shifts in earth's natural systems. There is climate change, there is ocean acidification, there is a biodiversity loss, there is a change in land use, there is pollution and there is fresh water depletion. So, these 6 major points have already happened which tell us that earth is in danger. Now, coming to climate change, we heard about 1 degree change in temperature or rise in temperature having catastrophic effects. Now, you would wonder why earth is heating up, and we keep hearing about greenhouse gases. So, what do these greenhouse gases do actually, and how do they actually increase the temperature, and what are these greenhouse gases? So, we know that these greenhouse gases are carbon dioxide, sulfur dioxide and many other oxides basically, and to understand what they do is, if you visualize that a very cold winter day,
if you get clouds in the night, then you know that the heat remains inside the earth, and whole through the night you will feel warm. Likewise, in a very hot day when there is lot of sun, if clouds come in the night, then this heat cannot escape, and therefore there is a general hot climate prevailing. So this is exactly what these greenhouse gases do. They don't allow the heat to escape from the surface of the earth into the universe, and that is how the earth starts getting heated up. Now what happens when earth starts getting heated up? Obviously there are droughts. We can understand that there is dry weather, so there are droughts, but more importantly there are also tropical storms and there are forest fires, and they are all happening because of increased temperature. The other important thing is that with this heat the glaciers are melting, not only from Arctic Ocean or Antarctic Ocean, but even Himalayas. You see, if somebody who has gone to Gangotri or Gomukh, they will realize that this Gomukh is shifting higher and higher because the ice is melting, and therefore the actual Gomukh point has moved up by about a kilometer or so from what it was some time back. So that is happening in all the glaciers all across the world. And now what happens with these melting glaciers? You would be happy that you get more land where you can live, but what is happening is that this melting ice leads to rising of sea levels, and then it impacts the coastal communities in a big way. And so if you imagine what will happen, it is estimated that Bombay, Mumbai, Cochin, Chennai and Trivandrum will no longer exist by 2050. If some of you have been to Mumbai, you know Haji Ali Dargah. We have to say that it will become completely drowned, and even Marine Drive will no longer exist after few years if this melting of glaciers keeps happening because of rising temperatures. And 5 countries may completely sink by 2100, and these countries are Maldives, Tuvalu, Marshall Islands, Nauru and Kiribati. Kiribati already is practically over, and all the inhabitants have been shifted to some other nations. So 5 countries will disappear from world map if this climate change keeps on happening. Now coming to second point, ocean acidification, and it has been estimated that in last few years the pH, ocean pH has decreased by 0.1 of what it was. Now you would say this is not a huge thing, 0.1 change in pH becoming acidic does not mean much, but the reality is that it means 30% increase in acidity. And what happens with acidification of ocean? It harms the ocean life in a big way, particularly those which are shelled organisms with carbonate shells. So these organisms are unable to develop their carbonate shells, and they will slowly become extinct, and that will also harm. There are some organisms which require alkalinity, because ocean water is currently alkaline, alkalinity to survive, to carry out their day-to-day activities. Those organisms will die. And also we have to see that other organisms that are dependent on these organisms for food, like many fishes, etc., will also die down. Now as a matter of fact, it has been found that in last 150 years the coral reefs have become half of what they were. And you know one place known as Great Barrier Reef around Australia, which was the biggest barrier reef in the world, is now practically gone. And so you can immediately see the impact of these reefs disappearing. So what will happen if this ocean acidification goes on? As I said, those shelled organisms like oysters and corals will become extinct. Already corals have become half of what they were. Then very interestingly, some organisms that require acidification to carry out their function, like clownfish. People who have watched this movie Finding Nemo will soon realize that the world will be finding Nemo, because Nemo will become extinct because of acidification of ocean. So what we saw in this Disney cartoon Finding Nemo, that Nemo fish is going to disappear completely from the face of earth and become extinct
unless we control this acidification process. And not only clownfish, other fishes are also at huge risk of getting disappeared. Now, coming to the third point, biodiversity loss. What is biodiversity loss? Biodiversity loss is a decrease in the available land space. Already 70% of the land space that was available has been occupied by human activity. Only 30% of land space is left, that is maybe forests and some other kind of thing, and many species have already gone and more species are facing this problem. This is because of increasing deforestification carried out by the human activity. The other thing that is common is increase in temperature, and when temperature increases, what happens is all the animals are suited to a particular temperature, and once the temperature keeps increasing, all the animals and even plants are forced to move towards the polar regions, North Pole or South Pole, and that leads to, and once they move, they also take diseases with them, a lot of virus. So, we see these pandemics where virus have been spreading is also one of the reasons of this change in the location of different species from one location to other species. Now, how to decrease this temperature is by decreasing the greenhouse gases, and what we know is that 50% of the greenhouse gases are absorbed by the ecosystems, about 30% by the oceans and about 20% by the forests. Especially in the water world, the wetlands or marshes, they occupy only 3% of the world's land, but they store about 2 times more carbon than whole of the forests combined. So, this is the storehouse for carbon storehouse for the world, and if the wetlands keep on decreasing, then this carbon gets released in the atmosphere as carbon dioxide. This greenhouse gas will lead to increase in temperature and worsen the problem. And as a matter of fact, already we have lost about more than 1/3 of the wetlands as of 1970s and we must be in a more serious situation right now. The other thing is, as I said, water or ocean is very important, and in the ocean, sea grasses and mangroves are the ones which absorb more than 4 times the carbon dioxide compared to even forests. So, these environments or micro environments of sea grasses and mangroves are also very important, and they absorb about 1000 tons of carbon per hectare of biomass and soils. So, so if these get affected, then again there is loss of biodiversity loss. So, this has all led to development of a concept called planetary health. And what is planetary health? By Rockefeller Foundation and Lancet Commission, in 2015 they decided that planetary health is the health of human civilization, of the whole planet or the human civilization, and the state of natural systems on which it depends. And because of the falling planetary health, Harvard University in 2015 founded this Planetary Health Alliance, and you would be happy to note that even NIMS is now taking a lead in this direction towards planetary health, and that is the main goal for why we are doing these things, because we are worried about the planetary health. Why we are worried about the planetary health? Because human health is dependent on planetary health. If planetary health is not good, then human health will suffer. And not only Harvard University and not only NIMS, but even United Nations set up these sustained development goals combined with new urban agenda and Paris Agreement on climate change, which serve as blueprint for human health as linked to the planetary health. And as a matter of fact, a Happy Planet Index has been developed to monitor this health, which is life expectancy into life satisfaction into equity adjustment and ecological footprint. So, we will have to look at this index very closely. Now, coming to, we already discussed that UN has set up 17 sustainable development goals, and this is actually the most ambitious and important global agreements in recent history. You know that UNO is unable to find a common ground on anything. We saw that G8 meeting, this G20 meeting, India at least was able to find some
global understanding or common understanding about something. But other than this, this is the only agenda that finds global agreement on all counts. So that is why these sustainable development goals are important. I will not enumerate these 17 sustainable development goals, because sir has already told us about them, which includes no poverty, zero hunger, good health, etc. But what I would say is that this was set up in 2015, and we are practically halfway through, or we are halfway through, and we have achieved, or we are on track. We have not only achieved, we are on track on only 15% of these goals. So 85% of the time what was expected that we would be able to do by this year, we are unable to do. 85% of the goals we are unable to achieve. Of course, the reason could be COVID-19 pandemic, high cost of living, conflict that is going on all over the world. We know this Ukraine-Russia conflict, we know this Arab conflict, but still that is putting us behind. And then climate crisis with floods, heat waves, wildfires, etc. they have been happening. So what NIMS has done is to adopt 10 of these goals, and I will quickly go through them. No poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable clean energy, industry, innovation, infrastructure, climate action and life on land. So these are 10 out of those goals that we have initiated in the first phase, and rest goals we will do it in the immediately after achieving these goals. Now you would ask why we bring university into this, why we bring NIMS into this. So that is a question that you might want to ask. So I have to say that NIMS has a leadership role in teaching, research, in setting up standard operating processes, and providing leadership to all. Transforming NIMS, as you are seeing, can cover a wide range of complex social, economic, environmental challenges, and that can help implement the SDGs. And of course, NIMS is very strong on education, research, innovation and leadership, which is our forte and which is essential in helping address these things. Now, the other thing is how NIMS will benefit, how you will benefit from doing these things. Of course, planet will benefit. So we can always demonstrate the impact of NIMS on the local community, on the nation and on global stage. We can also, there will be a lot of demand for education related to these sustainable development goals. So if we can very quickly set up these fellowships and these skill activities which will address these sustainable development goals, we will capture the whole market or whole demand for this kind of education. Then obviously it will help us build new partnerships not only with UN but with other universities, with government bodies and other things, and we can get new funding which are earmarked for these goals. So we can always access those funds, and we can always show that NIMS is a responsible and globally aware institution. So coming to the action plan for NIMS, I think the action plan that we have embarked upon is a whole university approach. So we will not do like everybody is doing something and right hand does not know left hand. That is not going to happen. We will take a holistic university approach to embark on step-by-step process. And what are those steps? Number one step is to map what NIMS is already doing. So you know we are already doing a lot of things. We are providing free food to our attendants and patients. We are providing some money for people who get delivery here. So a lot of things we are already doing to address this decrease in poverty. So we have to map exactly what we are doing. Then we have to develop skill specifically for SDGs. We have to undertake the SWOT analysis on what we are, what we have and what we can do, and then we can integrate, implement and embed these SDGs in our policies, and we need to monitor. But the first thing that we do, as Chairman sir told us, is to focus on one sustainable development goal every month. So for this month, our goal is to end poverty in all forms everywhere. And this is the goal for November 2023. These are small points. I will not go into it because it's a busy slide which shows you all the things that are the targets that are set up for 2030. But just to end, I will say that we have planned a lot of things for this first goal. Some of the things that
we have also, sir has already told you also, like free medicine distribution, then used books. That are very important, because used books, people who have passed, they don't no longer require those books, and there will be people maybe in other universities who are in need of those books. So we will request our passing out students who no longer need those books to donate them to the bank, and then we will distribute it to the needy students, and that will be one way. The other thing is unused clothes. Many of you cannot use clothes. We will have bins where you can put those clothes, and we will distribute it to the needy people. Then a lot of skills we are thinking of imparting, like carpentry skills, like some small dental things, and then some dyeing techniques, then some women-centric skills development, some basic computer skills, and those activities we are planning. And finally, we are going to do some awareness programs, particularly for reducing the healthcare costs and investigations. We will do a program called Lean Medicine, and there we will discuss how we can bring the healthcare costs, and also lot of other things we are planning. So please participate in them, and please give your full support, because this is not only for the health of planet, but this is for yourself. Thank you so much for your kind attention. Thank you, Honorable Vice Chancellor, sir, for giving us in detail about how to save the planet and what are the effects due to the activities the human is doing on this planet Earth. And I'm sure the activities which we have planned in NIMS University, it will be a great contribution to this humankind, and the future generations will remember us for saving this planet. A lot of activities are planned, sir, and we have got the details from each of the colleges what they'll be doing, and we'll be following up with those activities, and we'll be presenting at the end of this month. We'll be presenting it to our Chairman and Chancellor, sir. Because of his guidance only we have been able to do this. And all the very best to all the deans, directors, college principals, students. All the very best for making this month the No Poverty. We have dedicated to No Poverty, and let us all give our contribution in eradicating, elevating poverty from this nation. Thanks a lot for sitting there and listening to it. But few things which Chairman sir and VC sir has told us, please give your bit for No Poverty Muhim. Thanks a lot. Thank you. Thank you.